पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार पर्यटन विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाएगी। राजस्थानी व्यंजनों का जायका देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पर्यटकों में भी इन व्यंजनों के प्रति खासा चाव है। उत्सव आयोजित किए जाएंगे जिसमें श्री अन्न को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उत्सवों के माध्यम से श्री अन्न निर्मित विभिन्न राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू सुदूर देशों तक पहुंचेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि राज्यों के विकास के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। इसी अवधारणा को केंद्र में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से राज्यों में विकास की नई बुनियाद रखी ताकि राज्यों का सतत निर्बाध और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। नई सरकार की नीति और नीयत एकदम साफ है। हम विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए कटिबद्ध है। हम बेहतर तरीके से कुशल एवं स्मार्ट सुशासन, नैतिक मूल्य व्यवस्था, गांधी जी का रामराज एवं सुराज, विधि का शासन, समावेशी एवं सतत विकास, प्रशासन में जवाबदेही, प्रभावशील दक्षता एवं पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे। इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य संपादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे। पहला, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। माननीय सदस्यगण, भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, संस्कार की एक सरिता है। राजस्थान प्रदेश भी अपनी परंपरा और विरासत के लिए विश्वविख्यात है। इस धरोहर को सहेज कर हम आस्था और संस्कृति के संरक्षण के साथ विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेंगे। सर्वलोक हितकारी राज्य का जो स्वरूप आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दिया है, उस पर चलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चाणक्य ने कहा है, प्रजा सुखे सुखम राज्यम, प्रजा नाम च हिते हितम, ना तो प्रियम हितम राज्ञ, प्रजा नाम तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा के अपने प्रिय स्वार्थ में राजा का हित नहीं है, प्रजा के प्रिय में ही उसका हित है। वंदे मातरम, जय हिंद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे मैंने दे दिया, मैंने भेज दिया, मैंने भेज दिया हो जाएगा।
मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय गवर्नर साहब प्रस्थान कर गए हैं। सदन की कार्रवाई आधे घंटे तक के लिए स्थगित की गई है। Journey to bright skin made simple. Meet Plum 10% niacinamide face serum with rice water. 10% niacinamide brightens skin and rice water fades blemishes. It's beginner friendly and suits all skin types. Trusted by 1 million plus bright faces. Switch to the bright side with Plum niacinamide face serum. So we are going to have 7 temples here. In this area, just outside Parkota, there will be separate temples, not together. 7 separate temples will be built. कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है। हम तो 1000 ईयर्स का टेम्पल बना रहे हैं। 3500 लेबर इज वर्किंग डे एंड नाइट। पीपल ऑफ माई जनरेशन, इवन योर जनरेशन, younger generation, and many generations who have gone, they never ever thought that the Ram temple will be a reality. Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. The first Land Acquisition Act, it was implemented with the advice, aid and advice of ministers and myself. But the beauty of this Prime Minister is, when I went to tell him that please do not issue the third ordinance on this matter, he looked at me. He said, "You are telling me?" Not even once he would use the word, "You guys are responsible." He takes the full responsibility for what happens. His speech on my farewell, I couldn't believe. I was in tears. The cabinet ministers and secretaries to the government who were invited, they couldn't believe. Prime Minister spoke for 45 minutes and he spoke only about me. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing, and sharing with people who you think will benefit from these conversations. My guest today has been entrusted with the task of completing the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Mr. Nripendra Mishra is one of the most experienced bureaucrats of our times. He was Principal Secretary in the Prime Minister's office from 2014 to 2019. In the second term of Prime Minister Modi, when Mr. Mishra asked that he be relieved of his duties in the PMO, the Prime Minister accepted his resignation and tweeted, "Nripendra Mishra is among the most outstanding officers who has a great grasp of public policy and administration. When I was new to Delhi in 2014, he taught me a lot and his guidance remains extremely valuable." Unquote. Mr. Mishra couldn't really hang up his boots because he was soon appointed as the chairman of the Executive Council of the Nehru Memorial Museum and Library, and then as chairman of the Ayodhya Ram Mandir Construction Committee. So let's get chatting with the man himself who's entrusted with this task. He has to complete the construction of the Ram Temple by January 2024. Mr. Mishra, thank you so much for being part of the podcast. I'm delighted that you could find the time and come to the studio here because I know that the deadlines are really sharp with the Pran Pratishtha to happen in January 2024. So I'm guessing that your work is like literally 24/7 to keep an eye on everything. But before I begin to ask you about the timelines and the construction process, one question which, for our overseas viewers and for our young viewers who are not very aware, would I say, of what it means to install a deity, what it means to do a Pran Pratishtha. It's not just bringing a deity and keeping there. What does the process mean? I know neither you nor I are priests, but a person who's the man in the hot seat, I'd want you to explain a little bit about what the process is.
Actually, it's a good question. And as you said, particularly for those who are not in some manner sort of educated will be a wrong word, but they have not yet, have developed the kind of belief Sir. that people who are there and are attached with the temple will have. So now the process is that consecration means that the murti which is being sculpted today at the moment in Ayodhya, and hopefully it will be ready by middle of December, and we are going to have one of the three which is being sculpted there. So that will start its journey of consecration sometime around the second week of January. The journey starts with a dip in Saryu River. The murti will be Yeah. taken to the Saryu River. Yeah. Okay. में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर अवलोकन किया तथा प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न योजना